बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैमरा ऐड करेंगे। कैमरा आप कस्टमली भी क्रिएट कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी नाइस कंपोनेंट नेम सिनेमशीन, और हम यूनिटी रजिस्ट्री में जाते हैं और सिनेमशीन टाइप करते हैं। ओह सॉरी, मेरे हाथ से स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं। ओके, सिनेमशीन, ओके आ गया। स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा था, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है, सिनेमशीन कैमरा कंपोनेंट को। ओके, सिनेमशीन कैमरा इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिनेमशीन की ऑप्शंस आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव सिनेमशीन कैमरा हेयर। और आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो सिनेमशीन का ऑप्शन आ जाता है। सिनेमशीन में हम वर्चुअल कैमरा ऐड कर लेते हैं, एंड वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस। और यहाँ पे जो आप फॉलो देख रहे हैं और लुक एट देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेयर को ऐड कर देते हैं, प्लेयर एंड प्लेयर। और अब हम I have set up the virtual camera. In the virtual camera, when we add the player and look at player, then this transform will not be applicable. Okay, if you will change anything here, it will not affect the virtual camera. So what we have to do is that inside the body we have to add a follow offset. If you will add, you can add 7 or 5. On the Y 3.5, and on the Z 0.7 is good for me. You can add X damping, Y damping and Z damping a little bit. And in the aim function, you can track your object on the X axis 0.5, 0.4 and Y axis 0.55. So it will give you a better feel. Definitely you can change other things as well to get some better results, but for me it's fine actually. And now you will see a very nice camera following the player, and you can see that player can see right and left in the idle position. So we can jump, and in the jump you can see that camera also follows the player. So if we jump and jump, you can see second jump in the air is also happening. That's beautiful. And for now everything is good. We will just fill out this old area. Also I think we should focus the player a little bit from far. तो यहाँ पे हम environment के अंदर fog को enable कर सकते हैं, and it will give us better feel maybe. So let's play it again, और अब देखते हैं कि what should be the result. And yeah, with fog it looks really beautiful. Although आप देख सकते हैं कि हाँ, fog बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। यहाँ पे अलबत्ता आपको देख रहे हैं ये थोड़ा जो है वो हमें फिल करना चाहिए। and for this I will just make some more duplicates. तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी एरिया को फिल करें, हम यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा डुप्लिकेट दे देते हैं, ताकि जब हम बैक साइड पे आएँ तो कम से कम हमारी जगह जो है वो फिल्ड नज़र आए, शुड नॉट लुक क्रेजी। और इसको भी थोड़ा सा डाउन करते हैं। लेट्स प्ले इट अगेन वन मोर टाइम, और होपफुली अब ये काफ़ी अच्छा लगेगा। सो या ब्यूटीफुल। यहाँ पे किसी जगह पे ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, तो ये इस वजह से ये फ्लक्चुएशंस ये आपको नज़र आती है, इस तरह का इफेक्ट। और एनी ओवरऑल सीन इज़ ब्यूटीफुल, एंड मूव टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।